हेलो गाइस एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। हर एपिसोड में नए नए गैजेट्स और जुड़ी हुई नई नई इंफॉर्मेशन मेरा काम है आप तक पहुंचाना। और बेसिकली इस एपिसोड में भी आई एम डूइंग प्रिसाइजली दैट, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स लॉन्च हो चुके हैं और इनफैक्ट आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको उनके जवाब भी मिल जाएंगे इस एपिसोड में। हर एपिसोड की तरह बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, स्पेशली द गैजेट वर्ल्ड। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA TG। यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं, we just need to take a quick pause, turn around, do a quick recap to learn कि आखिर पिछले पूरे हफ्ते में क्या कुछ नया हुआ है इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स। नए नए अनाउंसमेंट्स, नए नए लॉन्चेस, कुछ नए अपडेट्स। लेट्स लर्न अबाउट एवरीथिंग इन दिस सेक्शन, न्यूज ऑफ द वीक। एसर ने अपना लेटेस्ट बजट फ्रेंडली लैपटॉप Acer Aspire 3 2025 इंडिया में लॉन्च किया है। ये लैपटॉप Intel Celeron N4500 चिपसेट के साथ आता है, जो बेसिक टास्क्स के लिए काफी एफिशिएंट है। It features an 11.6-inch HD display offering a compact and portable design. The device is perfect for those seeking for an affordable and reliable laptop for everyday use. सैमसंग की फ्लैगशिप Galaxy S25 सीरीज अब एक नए और इनोवेटिव फीचर के साथ आती है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। क्वालकॉम ने कंफर्म किया है कि Galaxy S25 सीरीज के स्नैपड्रैगन चिपसेट के थ्रू ये फीचर अनेबल होगा। It is designed to assist users in emergency situations where regular networks are unavailable, adding another advanced capability to Samsung's premium smartphones. गूगल ने अपना लेटेस्ट Android 16 Beta 1 ऑफिशियली रोल आउट कर दिया है, जो फिलहाल सिर्फ गूगल पिक्सल फोन्स के लिए अवेलेबल है। इस अपडेट में नए फीचर्स, UI इंप्रूवमेंट्स और एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। पिक्सल यूजर्स कैन नाउ एक्सप्लोर एंड टेस्ट द नेक्स्ट जनरेशन Android experience. It is compatible with the Pixel 6 series and later models. So guys, there you go. I am right now in San Jose. I just experienced the Samsung Galaxy Unpacked, and Samsung just launched their new lineup of Galaxy S25 smartphones. Basically, 3 different phones हमारे पास में है Galaxy S25, we have the S25 Plus and we have the S25 Ultra. And all these phones, they bring in some interesting new features, especially the new AI features. तो यहाँ पे भी the phones might look similar to their predecessors, जहाँ पे आपको देख के लगता है कि yes, the design is kind of growing over time. There are some refinements. For example, the S25 Ultra अभी जो है वो rounded corners साथ में आता है, which is quite good and ergonomic to hold. फोन जो है वो काफ़ी slim भी हो गया है, just 8.2 millimeters. Weight भी काफ़ी कम हो गया है and overall the experience is definitely elevated. आपको वो एक experience तो रहेगा ही, but what's changed is what's in the inside. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में we have the really powerful Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy in all the phones, which is really good. We have 12 GB RAM as standard, which is again fantastic. Storage options जो हैं वो 128, 256 और 512 GB के हैं in the S25. The S25 Plus gives you option of choosing between 256 and 512 GB. और अगर आप जाते हैं S25 Ultra की तरफ, then you can choose between 256, 512 and
1 terabyte of storage. इसके अलावा यहाँ पे there are some new AI features coming in जहाँ पे we have different refinements in Circle to Search. We have a new option which is called the Now Brief, giving you a summary for your entire day. Now bar के फॉर्म में वो आपको लॉक स्क्रीन भी दिख जाता है. Then of course options in the writing tools, in the drawing assist, in the call transcript, summary, all that हमको इन फोन्स में मिल जाता है. तो अगर हम बात करते हैं कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हार्डवेयर इज रफली अनचेंज्ड एक्सेप्ट फॉर द अपग्रेड ऑफ द अल्ट्रा वाइड जो अभी हो गया है 50 मेगापिक्सल्स का, कमिंग फ्रॉम 12 इन द प्रीवियस अल्ट्रा मॉडल. लेकिन यहाँ पे सैमसंग इज डूइंग लॉट्स ऑफ स्टफ वाया सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे ऑल थैंक्स टू द प्रो विजुअल इंजन हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो और एनहांस हो गए इन टर्म्स ऑफ हाउ वी एक्सपीरियंस द कैमरा. हमारे पास में यहाँ पे अभी ऑडियो इरेजर का ऑप्शन भी आ गया है. वी हैव द ऑप्शन ऑफ 10-bit HDR रिकॉर्डिंग. वी हैव द ऑप्शन ऑफ गैलेक्सी लॉग. सो एवरीथिंग इज कवर्ड अप हियर. तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द कैमरा एक्सपीरियंसेस, अगेन हार्डवेयर जो है उसके बियॉन्ड नाउ द सॉफ्टवेयर एंड द AI इज टेकिंग द लीड. बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4000 mAh इन द S25, 4900 mAh in the S25 Plus and 5000 mAh on the S25 Ultra. Of course, wireless charging, wireless power sharing हमको इन सभी फोन से मिल जाती है. We have 4 colors. This is the silver blue, titanium silver blue. We have the titanium black, titanium white silver and titanium grey. तो चारों जो कलर्स हैं, you have a look at yourself कि कैसे ये कलर्स जो है वो लगने वाले हैं. We have all the 4 colors here. अगर हम बात करते हैं बेस और प्लस मॉडल की, तो अगेन we have 4 colors each and they are same. दोनों ही फोन्स में you can choose whatever you want because we have the option of mint, we have the silver shadow, यहाँ पे we have the icy blue and this is the navy. तो बेसिकली इन माय ओपिनियन अगर आपको बताता हूँ ना, इन अ नटशेल, लेट्स से इफ आई हैव टू समराइज एवरीथिंग अबाउट दीज फोन्स, तो AI एक्सपीरियंस को सैमसंग ने बहुत एनहांस किया है. द गैलेक्सी AI, हाउ इट स्टार्टेड, नाउ आई थिंक इट्स मूविंग टू अ नेक्स्ट लेवल. ऑफ कोर्स द फोन्स आर रियली सिक्योर बिकॉज नॉक्स वॉल्ट हमको मिल जाता है इन सभी फोन्स में. एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो भी सैमसंग ने एनहांस कर दिए हैं. अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, might not look like a major upgrade, but yes, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी एनहांस हो गया इन सभी फोन्स का, ऑल थैंक्स टू द न्यू AI फीचर्स. One UI 7 पे अभी वी आर गेटिंग ऑल द न्यू सॉफ्टवेयर इन दीज फोन्स. Android 15 पे बेस्ड है एंड ऑफ कोर्स विल हैव 7 years ऑफ OS अपडेट्स एंड 7 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स इन ऑल द फोन्स. तो ये है सैमसंग का नया वाला लाइनअप. That's all from my side from San Jose. वैसे in the next episode you will get to know more about these phones. We'll unbox these phones and we'll try them really in depth just to experience how exactly is the Samsung's new lineup. There's 25, 25 Plus and 25 Ultra, all for you from my side from San Jose. I hope you enjoyed this. Let's move to the next one now. Now guys, back to the studios just to share a quick interesting fact with all of you. And the fact is about Apple devices. Did you know that if you smoke regularly near your Apple devices, let's say your iMac or Mac Studio or Mac Mini, MacBook, iPhone, etc. and अगर उसमें कुछ डैमेज हुआ, chances are कि Apple won't give you any warranty. Just because these devices, many times they have smart sensors inside to detect the external heat and कई बार जो vapors हैं या जो heat है उससे इन devices में कुछ damage पहुंच सकता है. And if Apple finds out that you have been smoking nearby these devices, or let's say the devices were exposed to some extreme heat, your warranty might be void. In a nutshell, I would just say quit smoking, and even if you do, try to do it away from your precious Apple products because you would not want कि वो खराब हो जाएं और उसके बाद आपको वारंटी भी ना मिले. So friends, I have with me Sally Jeong, and Sally is the Executive Vice President, Head of Framework R&D, a mobile experience business at Samsung Electronics. Sally, congratulations on this big launch. I mean, amazing devices. Thank you. Amazing features.
I just want to ask, if you were to pick some key new features that you just bought in the market with the new S25 lineup, what would you highlight? Just one? I mean, I'm sure there's more than one. Okay. So there's so many great features, but I would just like to then highlight three. First of all, it's multimodal AI. Now, this is a new way of user experience. It offers a new and diverse user experience. Basically, it takes multimodal, which not only speech, but images as well, to provide a natural user experience. Second is the Galaxy camera. It's always been a great feature, but it's become more powerful. Even in low light conditions, image quality is excellent. And there's also new photo editing features as well that are just alike. So number three is, in order to enable these powerful AI features, we also need the powerful hardware to be able to do that, to support that. And so with this new Galaxy phone, the S25 phone, we've developed together with Qualcomm the Snapdragon 8 Elite for Galaxy. And so this phone uses this chipset to enable all the AI features that I've mentioned, as well as to improve gaming functionalities and performance as well, the camera features. And so this is the third point I would like to highlight. Any message that you'd want to give for the potential users of these devices? Like maybe, what do you say, how they should enjoy these phones, or some features that they definitely should use, or any message to the potential user of the Galaxy S25 series? Yes, now it's true. We've come to live in the AI era has come. And AI is used to help us in various ways, whether it's on the PC, we always want to increase our productivity, which AI can help. And mobile phones are used by various different people, kids, adults alike. Everybody uses mobile phones. And what we focus on is not just bringing in AI function for the purpose of creating some AI function, but we want to integrate it into their everyday lives. There are features that people use on their mobile phones every day, like phone calls, calls, camera. And take camera, for instance. You're at a nice tourist attraction site and you take a beautiful picture, but there are so many people in the background that you want to erase. Now, that can be done with the AI features that we provide, and we're trying to make it as simple as possible, easy to use without having to learn. So that's what our designers, our developers focused on, to make it that easy to use, very intuitive. And so the message that I want people to remember is that we're striving to create an AI that will help you in your everyday life. Guys, welcome back from the break to your favorite show, Gadget 360 with Technical Guruji. और बेसिकली हमने Samsung की Galaxy S25 सीरीज के बारे में डिटेल में बात कर ली है, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड, जहां पे मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक टिप, और इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे. Now, speaking of the tip, this tip is all about privacy. See, many times we browse different websites, we download different apps, and वहाँ पे हमको sign up करना होता है. Now, while signing up, sometimes I'm not comfortable sharing my email address, या मैं recommend नहीं करूँगा कि आप किसी random website पे just अपना email address डाल दीजिए, because later on chances are कि आपको बहुत सारे spam मिलेंगे and the experience goes for a toss. Now, what you can use if you're using an Apple device is to use the private relay feature. तो basically what Apple would do is कि वो एक dummy email जो है वो share कर देगा with that app or website so that your account goes through. आपको सारे updates भी मिलेंगे, but basically your main email, which is your primary email, will stay all junk free. काफी interesting feature है, you can use in your Apple devices. It's called private relay. Friends, time again to move towards my favorite section. It's called Ask TG. ये एक सेक्शन है जहाँ पे मैं देता हूँ आप सभी के सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे होते हैं around new, upcoming और current gadgets. Let's see the kind of questions we have for this week's episode.
Okay, good option. But LG, being LG, I mean, not that popular of a choice, to be honest. If you really want to go into the LG side of things, you can go with these. काफ़ी आपको एक decent experience मिलेगा. But in that exact price range, you have many other options to choose from. So depends on how you want to pick things. You should get it replaced whenever it goes below 80% in terms of battery health. Now, not necessarily that you have to do it, but ideally to maintain a good user experience, अगर आपकी battery health 80% से नीचे जाती है, then I believe is the right time for the replacement. Crucial X6 definitely एक अच्छा option है. It's quite affordable as well. But if you want to go to slightly better and more popular choice, तो आपको थोड़े से पैसे extra लगेंगे. You can look at the SanDisk lineup of SSDs, but in comparison, Crucial जो product आपको मिलता है, even that's pretty good for what you are paying, and again a very good choice. External recorder you want to use with your Sony A7S III, you can look at Blackmagic 5, you can look at Atmos Ninja. आप दोनों में से जो आपका मन करता है, you can have a look at that. मतलब both are quite popular. You just would be able to record externally from your Sony A7S III camera. बैटरी अफेक्ट करते हैं इन अ वे कि बिकॉज इट्स अ वायरलेस सोल्यूशन समटाइम्स यू माइट सी सम हीटिंग गोइंग ऑन एंड आफ्टर ऑल हीट इज नॉट रियली अ गुड फ्रेंड ऑफ योर स्मार्टफोन्स बैटरी. तो इफ यू रियली वांट टू मेंटेन अ वेरी गुड healthy scenario for your smartphone batteries, avoid using wireless charging. But then again, the convenience comes along. You might want to use like a dock जहाँ पे आप MagSafe को use कर रहे हैं या Qi2 systems को use कर रहे हैं. तो it's quite convenient that way. But if you ask about a realistic scenario, I would still stick with a wired charging solution just for a good battery health. Okay, so guys, that's all from this week's episode. एक बार वापस से we covered everything all together from the new launches to in fact tips and आपके सवालों के जवाब. Next week I'll have something even more exciting just for you. तो आपको आना है वापस से सेम जगह पे सेम टाइम पे और इनफैक्ट उससे पहले आपको अपने ईमेल में जाके एक ईमेल कंपोज करना है. The address is tg@ndtv.com. आप पूछेंगे कि why would I do that? Well, you can use this email to drop everything. आपके questions, आपके suggestions, आपका feedback, जो भी है, this is just one short email address, tg@ndtv.com. I'm gonna see you all next week. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.